ये जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत 2047 तो उसके लिए ये बहुत एक अहम एक कदम है। Former MP also from Arunachal East. Sir is known for his public leadership in Arunachal Pradesh and his contribution to parliamentary and national policy matters. Of Sokopora, he is a distinguished plantation crop scientist who pioneered irrigation oil palm as a successful smallholder crops and helped strengthen India's oil palm research and development system. Sir, thank you so much for being with us for this occasion. Sir was a senior plantation crops expert known for technical guidance and leadership in this sector. We are welcoming you, sir, for this occasion. This program. And also, he is a part of this. Earlier that area was under opium, now the farmers they are going for the oil palm, and the state government also promoting in a big way. At least 10 districts are of very potential, and the Arunachal state government had targeted that almost 35,723 million hectare area should be under this hectare areas should be under oil palm cultivation, and right now we have around 4,690 hectares area under oil palm cultivation. Continuing the efforts, even the state governments under the national mission of edible oils oil palm, they have established the first oil palm processing mill that is in Roing. So that is a big achievement for the state. And of course in Ninglok, a crude oil processing factory has been established. That is also serving for the local, you can say the farmers, to just bring their materials without, because that has also perishable things. So within the limit, within the 48 hours, they can bring their produce so that can be processed and they can get good income. Friends, that we should go and try what we can do there. And I am sure that rubber has come up here because you are blessed with a climate requirements and the soil to grow most of the tropical crops. So that we are all eager, where we have got many stresses to grow many crops. We struggle with them. So we are very happy to come here and then see that the crop comes up well. Some of the few experts like Dr. Black, they clearly said India cannot grow oil palm because the other countries are not interested in India coming up and compete with them. But as Dr. Ratnam said, some of us stood firm, and based on our experience right in 1960-61 at Thodupuzha, that is in Kerala, the first plantation in the research station, we went ahead and started research as well as development programs in a small way. Then of course it has gone to this high position. So Dr. Ratnam has briefed about the major points, and I am sure that he will be speaking again. Under the guidance of then Director General ICR, Dr. Ayyappan, we prepared a long-term planting material production program as well as a breeding program for oil palm up to 2050. What should be our approach?
we have prepared a route plan, and 2025, how many seed gardens should be there? 2030, how many seed gardens? Like that, we have planned. And DSC also agreed for that. And we started accordingly. Up to the maybe some 10 years we were implementing. Afterwards, there are some setback in the DSC, probably because of change of personnel, and we could not get the required support. And though our industry colleagues were expressing their interest in establishing seed gardens, we could not make much progress as we planned. And I hope that the DSC will take the initiative to strengthen the planting material production program at this country. Our own materials with our own very high yielding types which are available at the Indian Institute of Oil Palm Research, to utilize them properly, to start the seed gardens, and ensure that by the year 2047 or 50, only domestic materials are planted in this country, and we automatically will get higher productivity, better per hectare yield in this country, because we always strongly feel that the domestic materials are far better than the imported materials. I am happy that the organizers gave me this opportunity to raise this point at this. Explained by my previous speakers, we have come a very long way from 1960s, starting from a few plants at the botanical garden to a plantation, first plantation in Todupuzha in Kerala, and now with the tiring work of our seniors like Dr. Nambudiri and Dr. Rathinam and so many other secretaries and government officials, and now we have reached a situation to identify the suitable areas in our country to increase the oil palm production, not only to produce oil, but to sustain the economy of our country. So the government of India has rightly launched this national mission on oil palm, that is oil crops, so comprising oil palm. मेरा नाम डॉक्टर एल वांगचू, अभी एट प्रेजेंट डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री पासीघाट। हाँ, एक्चुअली मैं डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और आज ये इंटरेक्टिव वर्कशॉप हम लोग ने किया है क्योंकि ये ऑयल पम्प को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मेन आइडिया बिहाइंड ये है कि जो इंडिया में जो जितना भी हम लोग जो ऑयल एडिबल ऑयल्स है उसको हम लोग अभी इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग का मेन ये है कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करके हमारे यहाँ ऑयल पम्प को एक्सटेंशन करके हमारा ऑयल पम्प जो ऑयल जो कंजम्पशन होता है वेजिटेबल ऑयल, उसका हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ये हम लोग का मिशन है इंडिया का। तो हम बोलते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम ऑयल पम्प करके ऑयल का सफिशिएंसी सिर्फ नहीं करेगा, उसके बाद और हम क्या कर सके, हमारा फार्मर्स का अर्निंग अच्छा होगा सस्टेनेबिलिटी के लिए। अभी आदमी लोग का माइंड में ये है ना कि ऑयल पम्प लगाने से लैंड ज़मीन ख़राब होता है, ये होता है, मलेशिया का एग्जांपल देता है, लेकिन हम यहाँ ये बोलते हैं कि हमारा अरुणाचल में अच्छा ज़मीन में नहीं, जो वेस्ट लैंड्स है वो वेस्ट लैंड्स में अब जितना भी हमारा वेस्ट लैंड्स है उसमें हम ऑयल पम्प करके हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। अभी फ्रेश फ्रूट बंच अगर आप बोलेंगे तो 20 टन पर हेक्टर आ रहा है, और अब जो 20 टन पर हेक्टर केजी है, और आपका 1 केजी में आपको 16 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। तो ये हमारा फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो ये हमारे फार्मर्स को टेकअप करना चाहिए, ये बात है। और दूसरा ये कि हम लोग इसको रोड मैप बनाना चाह रहा है ये वर्कशॉप में, ताकि हम लोग इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे, कैसे किस मेथड से करेंगे। तो हम लोग को जितना भी यहाँ में जो पार्टीज आया है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आया है, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज आया है, फिर हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट्स जितना भी है 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स जो नॉर्थ ईस्ट में है वो आया है, साइंटिस्ट आया है। तो हम लोग सब मिलके आज यहाँ में इंटरेक्टिव वर्कशॉप होगा, डिस्कशन होगा, इसके बाद में एक प्रॉपर रोड मैप निकालेंगे, उस रोड मैप को फिर हम बाद में पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के गवर्नमेंट को जमा करेंगे। ये है मेरी। सर लास्ट एक सवाल है सर, हम जब ऑयल पम्प का बात कर रहे थे, जो
ऑयल फार्म में जो ऑयल फार्म बागान करते हैं उनसे भी को क्या कुछ प्रॉफिट मिलते हैं सर? कुछ जब वो लोग बागान करते हैं कुछ मेंटेनेंस या ये सब भी सुनाई देते हैं, ये कैसे कैसे? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि ऑयल पम्प जब आप करने जाएगा तो ऑयल पम्प एक कैश क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है। तो आप अपना मर्जी से अगर ऑयल पम्प लगाएगा और फ्रूट आएगा तो आप खा नहीं सकते, वो तो फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। तो ये फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, मतलब फैक्ट्री वाला खरीदेगा। तो अब जब भी आप ऑयल पम्प करने जाएगा तो आपको ये फैक्ट्री वाला से हमको, जैसे अभी अरुणाचल में पतंजलि वाला है, तो उनसे बात करके उनके साथ MOU साइन करके उनके साथ मिलके फिर आपका प्रोडक्शन, आप जो भी कल्टीवेशन करना आप कीजिए और जो भी आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो लोग खरीद लेगा। तो ऐसे करके जाना है, अपना मर्जी से मत जाइएगा, वही बात है। I am Dr. P. Ratnam, President of Society for Promotion of Oil Palm Research and Development, Pedavegi, Andhra Pradesh. This society has the farmers, officers, scientists, processors, all as a member. The society is committed to oil palm development in the country, research and development in the country. सर, फर्स्टली यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जो काफ़ी अपने जो मेहनत करके हाथ पैर से ही सभी काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं सर, उन लोगों को आपका तरफ से आप क्या कुछ ऑयल पाम को लेके मैसेज देना चाहते हैं सर? Oil palm is the most important crop and profitable crop for this group of farmers, particularly the tribal group of farmers and all that. Their social upliftment can be achieved within 3 to 5 years of raising oil palm. So that is the thing. As I said earlier, particularly this Arunachal Pradesh has a good potential for oil palm development. So the farmer social status, financial status increase, and also the employment generation. And then oil palm can be grown not as a single crop. There are many crops like spices, like black pepper, cinnamon, nutmeg, clove, bay leaf, and all that can be grown under oil palm. So that will give the additional income. Now, if the farmer is having a cow, milking cow, so the milking cow, milk comes the daily. He can feed even the tender oil palm leaf and the cut leaf chopped, and they can feed. A portion of the oil palm field in between, they can grow green, these fodder crops. So in that way, continuous milk, continuous of the urine and the cow dung recycling into the field. So that will give them the continuous year-long service. If a family of 2 is there, year-long they can work in the farm. They can able to earn quite well. पाम ऑयल के जो ऑयल है वो अगर केक में भी यूज़ किया जाता है, खाने फूड में भी यूज़ किया जाता है, बैटरी ये सब में भी, तो ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा अगर ऑयल को यूज़ किया जाए तो हेल्थ के लिए भी बहुत सारा इशू, साइड इफेक्ट मिलते हैं सर। This using of palm oil is bad for health is a misnomer. People who have not understood the palm oil concept, they are giving press reports and all that. I also read. Even in the parliament, some MP has also raised. Palm oil is the healthy oil because it is 50% saturated fat, 50% unsaturated fat. This palm oil contains vitamin A, vitamin E. The red palm oil, the crushed red palm oil is filtered and taken. It is today India, the vitamin A deficiency is more in the small children. So the vitamin A deficiency can be overcome if in the midday meals or balwadis and anganwadis, the children are given 1 teaspoonful of palm oil to them, it will help. Now the problem of heart attack and all this they are telling, there is no proper clinical study done. Here and there somebody is giving the report, so it's a fault going. Why this concept of not using came? The American lobby of soybean said that 2 tropical oils, coconut and palm oil, is bad for health. That is the reason that the people, all our own doctors also say, you ask them, where is your clinical evidence? There is no proper clinical evidence. I am also compiling all this, maybe within a short time, a book will come on the health and wealth of the palm. हमारा यहाँ जो खासतौर 37 जो रुक्सिन एरिया है, रुक्सिन बीलाड एरिया, वहाँ में हमारा जो किसान है वो सब पाम ऑयल पे बहुत दिलचस्पी दे रहा है। ये जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत 2047, तो उसके लिए ये बहुत एक अहम एक कदम है जो हमारा इधर आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी भी कहते हैं कि इट इज़ नॉट लुक ईस्ट, अभी एक्ट ईस्ट हो रहा है और यही एक
विकसित भारत, विकसित अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पाम ऑयल जो है सिर्फ पाम ऑयल अपने आप में नहीं है, बट उसको आप मस्टर्ड का साथ मिला सकता है, रेपसीड का साथ मिला सकता है, उसका अन्य जो सनफ्लावर ऑयल है उनके साथ मिलाया जाता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपोनेंट विच इज़ बढ़ावा देता है। तो पाम ऑयल जो है इट इज़ हमको भारत को उसको विदेशों से लाना पड़ता था, से फ्रॉम मलेशिया और फ्रॉम इंडोनेशिया और इवन साउथ अफ्रीका। तो अभी हम लोग अपने आप पे सक्षम है। अभी तो हमारा अरुणाचल इटसेल्फ जो जिस मात्रा से लोग पाम ऑयल खेती को अपनाया है, तो इसमें एक इनकम लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अभी एक फार्मर के पास 2-3 लाख तो ऐसे ही आ जाता है। सो ये एक बहुत अच्छा कदम है जहां आपका आत्मनिर्भर होने का, लोगों को नौकरी ढूंढना नहीं पड़ता है, लोगों को व्यापार करना नहीं पड़ता है, वो फार्मिंग करके उनको पैसा आ जाता है। सर ये जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर यहाँ में हमारे जो इंडिया के लोग कई कई जगह यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनसे भी अभी जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे आने वाला फ्यूचर का एक रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन है। हाँ, क्योंकि यहाँ जो अभी एक्सपर्ट्स आए, साइंटिस्ट आया है, ये सब तो सब डायरेक्टर आईसीआर है। सब डायरेक्टर आईसीआर मीन्स आप सोचो आईसीआर मीन्स क्या है। सबसे जो ऊंचा लेवल में जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च में है, तो उनके डायरेक्टर सब आए हुए हैं। तो यहाँ पे उनका जो जिस प्रकार से उनका यहाँ लोगों को मात्रा में उनका जो एजुकेशन होगा, उनका जानकारी होगा, वो सब डाल रहे हैं। और हमारा यहाँ डीन साहब है, हमारे अपने ही यहाँ के वांगचू साहब, तो इसको कैसा वो राष्ट्रीय स्तर में इसको आयोजित किया, ये तो बहुत एक काबिल तारीफ चीज़ है। तो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का जो सपना है, इसको साकार करने के लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं।